of RTX. Turing was our first generation RTX GPU, combining ray tracing, programmable shading, and AI. The flagship Turing had a ton of processing power, 11 shader teraflops, 34 RT teraflops, and 89 tensor teraflops. Let me show you our new RTX GPU. So Ampere is a giant leap in performance. Ampere does 2 shader calculations per clock versus 1 on Turing. 30 shader teraflops compared to 11. So finally, Ampere doubles ray triangle intersection 3000 throughput. का launch है. Ampere's RT core delivers 58 RT teraflops compared to Turing's 34. And Ampere's new tensor core automatically identifies and removes less important DNA weights. And the new tensor core hardware यार यहाँ पर जो आज processes the launch है sparse network इसका at twice the 3000 rate सीरीज of का Turing. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं 238 tensor उन flops सबके बारे में बात compared to करेंगे 89. यार अगर स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम हो तो Ladies यार and एटलीस्ट gentlemen, बता देना NVIDIA's new Because, Ampere GPU, मैं बहुत our कम स्ट्रीम करता second हूँ. generation RTX, 28 billion transistors built on Awesome. Samsung 8N NVIDIA custom process. All 3 processors double rates over Turing, a triple double. It connects Awesome. to Micron's new G6X, the fastest memories ever made. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency of Turing. At NVIDIA, we use every engineering lever to squeeze every drop of performance out of the system. From architecture, custom process design, circuit design, logic design, packaging, Price custom यहाँ पर जो SerDes होने वाला है I/O, वो बहुत memory, awesome होने power वाला है and उसके लिए thermal आप लोग design, वेट करो PCB थोड़ा सा design, software and algorithms. Thousands of engineers per generation, billions of dollars. Full stack engineering and extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, and low power are all world class. And real application performance highlights Ampere's new RT core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speed up. Ampere RT core doubles ray intersection processing. Its ray tracing is processed concurrently with shading. And Ampere can render cinematic images with motion blur 8 times faster than Turing. Let's take a look at Ampere in action. At our kitchen तो GTC यहाँ a पर few हमें months डेमो ago, दिखाने we वाले showed हैं. Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000. Turing was doing 720p, 25 नहीं नहीं यहाँ frames पर per second. प्राइसिंग अच्छी होनी Today, चाहिए बहुत अच्छी We're going to होनी. run an enhanced version of Marbles with even more special effects. And it is running at 1440p, 30 frames per second, over 4 times the performance. Ladies and gentlemen, enjoy Marbles at night. तो मतलब ये रियल टाइम पे रेंडरिंग हो रही है ये. लेट्स सी. जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि 3000 सीरीज जो होने वाली है ना वो ऑसम होगी. अब देखना ही है कि सच में कैसी होने वाली है. एक्चुअली मैं भी पहली बार ही लॉन्च देख रहा हूँ. तो यार जो लोग अभी भी स्ट्रीम से जुड़े हैं यार वीडियो को लाइक कर दें एक बार. मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है यार अपने में. Marbles is entirely path traced. No rasterization, all real time. There are hundreds of area lights, including spherical area lights. There's no pre-baking, everything is dynamic. तो मतलब अब जो है यहाँ पर हमारी सेकंड The depth जनरेशन आ of गई field RTX is की. film quality and beautiful. वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है. Everything is dynamic. Diffuse GI, all dynamic. There are hundreds of rigid bodies, 80 million triangles. Materials are physically accurate, physics simulation and volumetric rendering in real time.
मतलब देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी DLSS इम्प्रूवमेंट आया है। 2.0 is doing the super resolution and AI denoising. मतलब फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट इन लोग ने कर लिया है DLSS में। Let's compare Marble's Turing and Marble's Ampere. You can see dramatic visual quality jump of Ampere. ये चीज़ Marbles on इंटरेस्टिंग Turing होगी। runs at 720p, 25 frames per second. Marbles on Ampere runs at 1440p, 30 frames per second, more than 4 times the performance. And Ampere even did area lights and depth of field. तो A मतलब हमें giant 4 performance leap. टाइम्स Today's games are giant worlds, उस हिसाब से indoor and परफॉर्मेंस out, मिलेगा। with photogrammetry, dense geometry, and lots of characters. Games are over 200 gigabytes and getting bigger. This is like 50,000 songs or 400 hours of streaming video. Games have pushed PC I/O and file systems to the breaking point. CPUs copy files from disk and decompress the game image. This is fine when the storage system was slow, 50 to 100 megabytes per second. Now with Gen 4 PCI Express and solid-state drives, PCs can transfer data at 7 gigabytes per second, 100 times faster. तो CPU copying मैंने data to बोला था memory and कि आने decompressing वाले game कार्ड जो है images वो is Gen now 4 the पर bottleneck. इफेक्ट डाल सकते हैं और Decompressing देख data के from लग रहा 100 है कि megabytes होगा per ऐसा। second hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 gigabytes per second SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 इंटेल की वाट CPU लगने cores. वाली है अब। Today, we're announcing NVIDIA RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory. GPU lossless decompression. And collaboration with Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. With NVIDIA RTX I/O, vast worlds will load instantly. Picking up where you left off will be instant. This is a very big deal for next generation gaming. Let me show you Ampere in action in one of the most anticipated games of 2020, CD Projekt Red's Cyberpunk. This trailer is called Scenes of Cyberpunk RTX. It shows ray trace reflections, diffuse illumination, shadows, ambient occlusion, Let's and see अब यहाँ DLSS पर 2.0. Enjoy. लेट्स सी अब यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब कितना इन्होंने प्रोग्रेस किया है। साइबरपंक इट्स कमिंग। यार सेकंड जनरेशन में रिफ्लेक्शंस देखने लायक होंगे। ये हो गया ऑफ हो गया था। Ladies and gentlemen, our new flagship GPU, the NVIDIA GeForce RTX 3080, powered by Ampere, second generation 3080 RTX architecture. तो यार पहला तो GPU अनाउंस हो गया 3080। आई होप शायद 2 या 3 ही होंगे आज, ज़्यादा नहीं करेंगे ये लोग। 3070 हो जाए तो बड़ी बात है। पहला है इनका ये कार्ड। ऑसम, बढ़िया यहाँ पर एनिमेशन किया है। अच्छा अभी तक डिजाइन रिवील नहीं किया इन्होंने, अब डिजाइन रिवील हो रहा है। वाह, यार जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया यार जल्दी से लाइक कर दो यार। 238 टेंसर टेराफ्लॉप्स। अच्छा सेकेंड जनरेशन आरटी कोर्स भी यहाँ पर दी हुई है। हाँ मतलब जो डिजाइन लीक हुआ था वो सही लीक हुआ था। ओहो, मतलब एयर फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट किया है।
वाह वाह। ओहो, एक मिनट, 2 फैन है इसमें, एक नंबर। मतलब यहाँ पर आपको 2 फैन देखने को मिलेंगे, एक आगे एक पीछे। यार इसी बात पे जल्दी से लाइक मारो यार। The NVIDIA RTX 3080. I have one right here. Let me show it to you. ये awesome। हाँ, छुपा के रखा था It चाचा is ने। beautiful. Look at this. The RTX 3080. It is wonderfully crafted. It's going to look beautiful in your PC, and it lights up. Now let me tell you about some of the other exciting technologies inside. Turing used G6, the fastest memories at that time. The industry thought that was the limit. For Ampere, we had to push through that limit. Working with Micron, we designed the world's first memories with PAM4 signaling, pulse amplitude modulation, with 4 voltage levels that encode 2 bits of data each, 0001, 1011. Each voltage step is only 250 millivolts. तो So in मेमोरी the में same भी period of time, changes देखने को G6X मिले can हैं। transmit twice as much data as G6. ओह, PAM4 is extreme signaling technology, and it's just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ये ever चीज़ awesome है flow-through यार। design, working harmoniously बेहतरीन with यार। PC chassis cooling system, pulling in cool air from the outside, flowing through the GPU, and pushing hot air straight अभी out the प्राइस chassis. रिवील नहीं हुआ, इसका To रिवील allow होगा room अभी। for a fan to flow air directly through the module, our engineers architect a super dense PCB design that is 50% smaller than previous, यार while जल्दी adding से the वीडियो bigger लाइक कर दो Ampere यार। GPUs, HDMI 2.1, अभी और भी PCI ग्राफिक्स कार्ड Express आज रिवील 4.0, होंगे। and G6X. There are 2 independently controlled fans. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated air out through the graphics card brackets. A backside pull-through fan passes cool air over the fins of the heat pipe and directs the hot air to the top and back of the chassis to be exhausted by the system fan. The 3080 flow-through system is 3 times quieter and keeps the GPU 20 degrees cooler than the Turing design. यार It can cool 20 90 डिग्री कूल watts कर more दिया than यहाँ पर Turing. इन्होंने। The generational leap is ultimately the most important factor of new GPUs. अब यहाँ A पर बेंचमार्क significant दिखाएंगे यार ये technology लोग। advance is needed to inspire content developers to create the next level of content and for the install base to upgrade. Let's see how the 3080 stacks up to previous generation architectures on the latest graphics intensive games. 3080 is faster than 2080 एक Ti. नंबर। 3080 is मतलब- twice the performance of 2080 at the same price. ओहो, Ampere is the biggest generational leap we've ever had. मतलब Ladies 3080 and जो वो gentlemen, 2080 Ti से भी दुगना है। NVIDIA मतलब GeForce बहुत RTX आगे यार। 3080, our new flagship GPU, powered by भाई Ampere, our 3080 second है तो generation 3090 RTX क्या है, GPU कहाँ जाएगा architecture. फिर? Incredible amounts of processing in the shader, RT ray tracing core, and tensor core for processing AI. 10 gigabytes of G6X, twice the processing power of 2080, and at the same price, starting at $699. Available September 17th. One of our ये most आएगा। popular GPUs ये is the मैं 70 लूंगा। series. 970, 1070, 2070 were all hugely popular. मतलब भाई You're gonna love the 2080 new Ti से भी RTX बहुत आगे 3070. निकल गए यार ये लोग तो। Faster than the 2080 Ti, the Turing enthusiast GPU priced at $1,200. बहुत सही यार। Ladies and gentlemen, the new GeForce RTX 3070. Let me show it to you. भाई प्राइस मतलब It's a work of art. एक नंबर। 20 चलो, shader इतना teraflops. कूल नहीं है लेकिन बढ़िया यार। 40 RT teraflops. And 163 teraflops tensor core for AI अब processing. चलेगा रेड डेड With रिडेम्पशन 8 2 आराम gigabytes से। of G6, हाँ, सही कहा यार। RTX 3070 is faster than the $1,200 RTX 2080 Ti, बढ़िया। starting at $499. Available in October. मतलब Every generation, we 2080 pack in our Ti best जैसा ideas to increase परफॉर्मेंस performance while introducing $500 new के features जीपीयू that में। enhance image quality. Every couple of generations, the stars align, as it did with गजब है Pascal, भाई, क्या कर and we रहे हैं get ये a लोग। giant generational leap. Pascal was known as the perfect 10. Pascal was a huge success and set a very high bar. It took the super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on
reached the same performance as Pascal with ray tracing off. On a technical basis, this was a huge achievement. The images are far more beautiful, and reflection and shadow artifacts are gone. But gamers wanted more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate at the same time. So we doubled down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core. The triple double. AMPERE knocks the daylights out of Pascal on ray tracing. तो यार ये बहुत And बड़ा even इशू with था ray उन tracing सब चीजों में, on, crushes क्योंकि Pascal on frame रे rate. ट्रेसिंग ऑन करने के बाद To all my परफॉर्मेंस बर्बाद हो Pascal जाता gamer था. friends, इसमें it is फिक्स safe किया to इन्होंने. upgrade now. Amazing ray tracing games are coming. Activision and developer Treyarch are launching a new Call of Duty on November 13th. It's a masterpiece and it looks incredible. There are dynamic lights, ray tracing, shadows and ambient occlusion, DLSS 2.0, and NVIDIA Reflex super low latency technology. The last Call of Duty sold an amazing 30 million copies. Activision put together this trailer of never before seen footage. Enjoy. यार ये ट्रेलर देखो यार आप लोग. ओ भाई मतलब भयंकर एक्शन दिखाया है यार. Let me talk to you Big about one more thing. Several years ago, we started building the Titan, pushing the GPU to the absolute limit to create the best graphics card of that generation. It was built in limited quantities and only through NVIDIA. The distribution was limited. The demand surprised us. Creatives were making 4K movies, rendering cinematics. Researchers built workstations for data science and AI. Bloggers built broadcast workstations. Flight and racing simulation fans built sim rigs. There is clearly a need for a giant GPU that is available all over the world. So we made a 3090 giant शायद है शायद Ampere. यार. Ladies and gentlemen, the RTX 3090? 3090. आ गया 3090. Come here. यार मैंने बोला 3090 आएगा. Here, Papa. एक नंबर. Alrighty. 3090 is a beast, a ferocious GPU, a BF मतलब GPU, टाइटन का क्या होगा फिर? 36 shader teraflops, 69 RT teraflops, ओ भाई, टाइटन 285 सीरीज को tensor मतलब क्या teraflops, कर रहे हैं ये and लोग? it comes टाइटन with से a मैच कर रहे हैं massive क्या? 24 gigabytes of G6X. It comes with a मतलब silencer, a 3-slot dual axle flow-through design, 10 times quieter, and keeps the GPU 30 degrees cooler than the Titan RTX design. But there's more. The 3090 is so big that for the very first time, we can play games at 60 frames per second in 8K. वो भी This is RTX insane. ऑन करके. Because it's impossible for us to show you what it looks like on this stream, we invited some friends to check it out. वो एक नंबर भाई 8K गेमिंग. मतलब PlayStation 4K पे ला रहा है तो अभी 8K पे ला रहे हैं. बहुत बढ़िया. Andy and this is Tim. ओहो, LG OLED पे I've never 8K been खेलेंगे. more excited to do anything. Oh! Are you kidding me? Oh my gosh. Oh my god. No way. This is f***ing incredible, dude. This is amazing. Holy. The resolution on this is silly. My God. You can see wear and tear on the treads. Look at this. Why is it so detailed? All right. Move fast and shoot भाई things. 8K Sir, I गेमिंग. can see everything. Oh, I need to shoot you though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so realistic. I feel like I'm really in battle. यार वीडियो is जल्दी जल्दी लाइक कर दो यार. insane. कौन कौन I wanna जो look देख at रहा है the यार pretty कम से कम वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार. Dude, आज the लॉन्च है ray यार tracing अपना. is insane on this. These are the sizzle reels that you see. This is basically hacks. And then it's like, it'll never look like that.
but it does. I'm like looking across the vistas, the grand vistas that are happening right now. Holy shit, look at this. This feels like a Disneyland experience. ओ Oh, it भाई is so मतलब smooth. It's 8K butter. गेमिंग Oh, अब it's पीसी पे भी smooth as चलेगी shit, यार. dude. I can't believe it's not butter. I mean, this is game changing. There's no other way to put it. My mind is blown, dude. Wow. It's been 20 years since the NVIDIA GPU introduced programmable shading. The GPU revolutionized modern computer graphics. Developers jumped on and invented clever algorithms, like shaders that simulate realistic materials, or post-processing effects for soft shadows, ambient occlusion, and reflections. Developers pushed अब the क्या limits of है? rasterization beyond anyone's expectations. Meanwhile, NVIDIA GPU processing increased a stunning 100,000-fold. Gaming became a powerful technology driver. Gamers grew to billions, and gaming pushed into all aspects of entertainment and culture. If the last 20 years was amazing, the next 20 will seem nothing short of science fiction. सही बात यार, सही बात. Today's Ampere launch is a giant step into the future. This is our greatest generational leap ever. The second generation NVIDIA RTX, fusing programmable shading, ray tracing, and artificial intelligence, gives us photorealistic graphics and the highest frame rates at the same time. Once the holy grail of computer graphics, ray tracing is now the standard. And Ampere is going to bring you joy beyond gaming. NVIDIA Reflex to improve your response time. NVIDIA Broadcast turns any room into a studio. And Omniverse Machinima turns you into an animated filmmaker. We are super pleased with 3070, 3080, and 3090, the first three members of the Ampere generation. You're going to feel a boost like never before. I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. Homes will have holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your holodeck, your lightspeed starship, your time machine. In this future, we will look back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating the arrival of Ampere. तो यार यहाँ पे लाइव स्ट्रीम खत्म होती है, थोड़ी बहुत चैटिंग कर लेते हैं. अब इससे पहले कुछ बंद हो तो जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया मैं बता दूं 3080, 3090 और 3070 लॉन्च हुआ है. और क्या बोलते हैं, इसका आवाज़ थोड़ा कम कर देते हैं. हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ यार. और जो प्राइसिंग मैंने सोच रखी थी उस लिहाज से तो यार अच्छी है. देखा यार जिस लेवल का परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है भाई, उस लेवल का तो भाई बेस्ट है. रुको एक मिनट. उस लिहाज से तो यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है. आप ऐसे समझो 499 का ग्राफिक्स कार्ड यानी कि RTX 3070 वो आपको 2080 Ti से के लगभग बराबर परफॉर्मेंस दे रहा है. क्या चाहिए यार, 35,000 रुपये का ग्राफिक्स कार्ड 1,20,000 रुपये वाले ग्राफिक्स कार्ड के बराबर परफॉर्मेंस दे रहा है. भाई मैं तो 3070 पे सोल्ड हो गया. और 3080 का परफॉर्मेंस तो भाई बहुत ज़्यादा है. उन्होंने बेंचमार्क दिखाया तो मतलब आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा आपको लगभग 60% परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिला है 3080 से. अगर आप 2080 Ti से 3080 पे जाते हो तो 60% परफॉर्मेंस में जंप देखने को मिला है. Talk about an amazing GPU today. Modern GPUs are technology marvels. ओ रिप्ले चल रहा है तो काफ़ी अच्छा रहा. और 3090 ने तो भाई लिमिट क्रॉस कर दी. जहां पर हम लोग 2080 Ti में पहले वो हम लोग नहीं कर पाते थे, क्या बोलते हैं 2080 Ti में अगर आपको याद हो तो रे ट्रेसिंग ना बहुत दिक्कत करता था. 1440p पे बहुत फंस के चलता था, 4K तो भूल जाओ. अब 3090 ना वो उसने RTX टाइटन, अगर आपको याद हो बहुत महंगा ग्राफिक्स कार्ड था, उसको बीट कर दिया लगभग. वो अब आप 3090 पे 8K पे RTX DXR को ऑन करके खेल सकते हो. तो भाई बहुत अच्छा काम किया है. मैं एनवीडिया के टच में भी हूँ और देखो यार मुझे कब रिव्यू यूनिट मिलता है. वैसे आज तो एम्बार्गो लिफ्ट हुआ है, देखते हैं ये रिव्यू यूनिट कब तक आता है और फिर उसका रिव्यू कब तक आता है. यार अनबॉक्सिंग बनाना तो बनता है. तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया यार लाइक कर दो, और इसके ऊपर वीडियो आएगा बहुत जल्दी. मैं एक काम करता हूँ, बस
5 मिनट और लाइव रहूँगा, 30 मिनट जैसे ही होता हम लोग फिर लाइव स्ट्रीम को एंड कर देंगे। मैंने काफ़ी टाइम बाद जो आज स्ट्रीम चालू करी है, बहुत टाइम हो गया, तो यार काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि मैं सोच रहा था कि जो है 3070 3080 के प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3070 3080 के प्राइसेस जो थे वो यार जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हालांकि नया मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ है 3090, तो देखा जाएगा। हालांकि 3090 के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी एनवीडिया से जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि 3090 जो होगा ना वो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं है। एक्चुअली ये आपको जो है क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़े जो बंदे हैं, जैसे कि टाइटन RTX जो आया हुआ था, जो 2.5 लाख 3 लाख का ग्राफिक्स कार्ड हुआ करता था, वो टाइटन RTX नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं था। टाइटन RTX डेटा सेंटर्स वालों के लिए या रिसर्चर्स के लिए था। हालांकि आप उस पर गेमिंग कर सकते हो, तो उसकी प्लेस पे 3090 आया है। प्राइस में आधा है, परफॉर्मेंस में और भी उससे बहुत आगे है। तो 3090 को कंज्यूमर ग्रेड तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हालांकि नेमिंग ऐसी है कि कोई भी समझेगा कि जो है कंज्यूमर ग्रेड का है। तो अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ 3080 और 3070 कंज्यूमर ग्रेड के हैं, ऐसा मुझे बोला गया। खैर, तो काफ़ी अच्छा रहा यार, और परफॉर्मेंस वाइज तो यार मज़ा आ गया यार। बाकी प्राइसेस में जितना पहले आपको 2070 जितने का मिलता था उतना ही आपको 3070 उतने का ही मिलेगा। बाहर लॉन्च हुआ है 35,000 रुपये का अभी, तो इंडिया में आते आते 45,000 रुपये का हो जाना चाहिए। 45,000 48,000 रुपये का 3070 मिलेगा। और भाई 3070 जब ये सब कर सकता है तो 3070 सुपर क्या करेगा, देखने वाली चीज़ होगी। हेलो हेलो, काफ़ी लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं यार। हाँ, एक बात मैं बता दूं, जो लोग जिन लोगों के आप में से क्वेश्चंस है ना, वो एक काम करो, आप लोग जो है क्या बोलते हैं, फेसबुक मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो यार आप लोग। ये है द इंडियन बजट गेमर ग्रुप है। ये मेरा ग्रुप है ना, आप लोग इधर आ जाओ। यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर काफ़ी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइंड होंगे, तो यार आप लोग इधर आ जाओ। आप लोग के जो क्वेश्चंस हो, जो क्वेरीज हो, इधर आंसर होती है, मैं आंसर कर दूंगा। ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइंड हैं, देख सकते हो 51,000 होने वाले हैं। सही है। बाकी जो लोग आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली सजेशंस लेना चाहते हैं, आप लोग इधर आ सकते हो। मैं आपके यहाँ पर आपकी क्वेरीज को आंसर करता हूँ। तो वे काम करें यार, इंटेल पिट चुका है। इंटेल की बातें, इंटेल रिप इंटेल से कुछ नहीं होगा यार। इंटेल ऑलरेडी रिप हो चुका है, वो भूल जाओ। उसके दिन खत्म हो चुके हैं, वो खत्म। देखो यार, अब AMD की 4000 सीरीज आने वाली है। सोच रहा हूँ यार कि 4000 सीरीज का Ryzen 9 लिया जाए, फाइनली वापस से अब AMD पर आया जाए। रिव्यू यूनिट का भी कंफर्म नहीं है कि जो है कौन सा रिव्यू यूनिट मिलने वाला है। 3070 मिलता है कि 3080 मिलता है, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। और हाँ, एक चीज़ तो उन्होंने बताया ही नहीं कि जो है पावर कनेक्टर कौन सा लगने वाला है। पावर कनेक्टर के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। सुनने में तो लीक्स में ऐसा आ रहा था कि जो है पावर कनेक्टर अलग लगेगा, तो PSU हो सकता है चेंज करना पड़े। देखते हैं क्या सीन होता है। अगर चेंज होता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यार जिन लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया यार, ज्वाइन कर लो। TIBG नाम है, द इंडियन बजट गेमर। मोस्ट प्रोबेबली इसका लिंक आपको लाइव स्ट्रीम के नीचे मिल जाना चाहिए, तो उधर से आप लोग ज्वाइन कर लेना, अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं यार, वीडियो के एंड करते हैं। 1 मिनट बाकी है फिलहाल। अभी 1-2 लोग कुछ पूछना हो तो यार पूछ लो। बहुत तेज़ी से यार निकल रहा है, मैंने फ़िल्टर ऑन नहीं कर रखा है, तो आप लोग स्पैम कर रहे हो। ठीक है यार, कभी कभी लाइव आता हूँ, चलता है, इतना स्पैम करना। आई लव योर कंटेंट होने भाई। ये हर्ष पुजारी, थैंक यू भाई यार, आई लव यू टू। बाकी ठीक है। बाकी और क्या कर सकते हैं हम लोग। लाइक कर दो यार, जाने से पहले यार थोड़ा सा प्यार बरसा दो यार अपना। तुम लोग थोड़ा सा लाइक कर दो यार वीडियो को। भाई शाउट आउट, जो लोग कमेंट में शाउट आउट लिख रहे हैं उन सबको शाउट आउट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। इसके ऊपर शॉर्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा जो मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, क्योंकि अभी बनाने बैठूंगा तो क्वालिटी में मज़ा नहीं आएगा ना। तो चलो ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय बाय।